हेलो गाइस, तो सेकंड पार्ट महात्मा गांधी की ड्राइंग का है एंड इस पार्ट से पहले मैंने इसका आउटलाइन पार्ट भी डाला है जिसमें कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे आउटलाइन क्रिएट करता है कि यूजिंग ग्रिड मेथड ये सिखाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में इस वाली इमेज को कैसे स्टेप बाय स्टेप शेड करते हैं ये सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही किसी देरी के। शेड करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ एंड आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को सिखाया कैसे इसको शेड करते हैं। After charcoal pencil shading, then I use makeup brush for blending. ओके, तो ब्लेंडिंग कर देने के बाद अब मैं मैकेनिकल इरेजर एंड वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगा हाइलाइट्स ऐड करने के लिए। एंजॉय द प्रोसेस।
ओके, तो फेशियल पार्ट शेडिंग कर देने के बाद अब मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ करूँगा हाइलाइट्स ऐड करने के लिए। सो फाइनली गाइस स्केच कंप्लीट हो चुका है और स्केच कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी लुक आई। आई होप आप लोग सभी लोग समझ गए स्टेप बाय स्टेप कैसे इस फोटो को ड्रॉ करते हैं। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।